Another question that can be asked in your Python Viva is, what is the difference between append and extend method on lists? So as you can see over here, we have a list A in which I have put 12, 15, 20, 45, 70. Similar elements I have put in list B also. तो मैंने यहाँ दोनों को डिस्प्ले कराया है और आप देख सकते हो कि A और B सेम वैल्यूज को शो कर रहे हैं. बट जब हम अपेंड करते हैं, व्हेन आई राइट A डॉट अपेंड 50, 90 एज अ लिस्ट, सो वो उसको एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा. सो दिस एलिमेंट इज एट पोजिशन 0, then 1, then 2, 3, 4 and this all together is at 5. Whereas extend उसको एक लिस्ट की तरह ऐड करता है and they are added individually at 2 different positions. So that is the difference between append and extend, कि append एक वैल्यू को ऐड करता है और extend elements को अलग अलग से ऐड करता है. Similar way, if you add a string, so it will be added as a single string with append, but each alphabet will be added separately in extend.